Assalamu alaikum, dear friends and students. How are you? I hope you will be fine. I am Mubashir from multi-learning platform. In today's discussion, we will talk about distinctive types of noun, and we will study them through comparison. Comparison is given between abstract noun and material or concrete noun. First of all, we will know about abstract noun. Abstract noun names of feelings, qualities, traits, ideas or actions are known as abstract nouns. Names of feelings, ideas, emotions, qualities or actions are known as abstract noun. Then we will define material or concrete noun. Material or concrete noun, names of materials, it means substances, are known as material or concrete noun. In this way, in the first point, we will discuss about the definition of the abstract and concrete or material noun. In the next point, we will talk about names of ideas, actions, qualities or states. Those cannot be observed or experienced through senses. As you know that we have 5 senses. If the feelings, sensations, qualities, actions or states have the name which cannot be distinguished, experienced or observed through our 5 senses, then the name of these qualities, actions, states or ideas known as abstract noun. Further, we will move to material noun. Names of materials, substances which can be observed or experienced through 5 senses. It means the name of things or substances which can be experienced or observed through our 5 senses. The names of these materials or substances are known as material or concrete noun. In the next point, we will talk about abstract nouns are mostly unmeasurable. We can't we can't measure the abstract noun, such as childhood, such as anger, such as beauty. In this way, abstract nouns are mostly unmeasurable. But when we talk about material or concrete noun, the material or concrete noun have both qualities. They can be measurable or they can be unmeasurable. In the next point, we will talk about the examples of the common concrete, material or abstract noun. In the examples of the abstract noun, we discuss the examples such as justice, goodness, beauty, softness, etc. All these are abstract nouns such as justice, insaf, such as goodness, such as beauty and softness. All these are known as abstract noun, and these are the examples of the abstract noun. Next, we will move about examples of the concrete noun. Gold, sugar, chalk, bricks, table, chair, etc. All these are material or concrete noun. प्यारे तालिब इल्मों और दोस्तों, मैं मोहम्मद मुबशिर अपने यूट्यूब चैनल मल्टी लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही 2 अहम इकसाम को, किस चीज़ की, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन को कंक्रीट नाउन भी बोला जाता है, और इनको हम लोग मवाजना करके एक दूसरे के साथ स्टडी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों के जहन में बैठ जाएं। तो पहले डेफिनेशन करेंगे दोनों की। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये नाम होते हैं एहसासात के, ये नाम होते हैं हालतों के, ये नाम होती हैं काम के, एक्शंस के, अफ़ाल के हमारे, ये नाम होते हैं ख़यालात के। तो इस तरीके से इनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसमें मुजर्रद भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं मटेरियल कंक्रीट नाउन की, इसको उर्दू में हम इसमें मादा भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों के नाम जो मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज़ रखती हैं, करैक्टरिस्टिक्स रखती हैं, मादी खसूसियात रखती हैं, उनको हम लोग मटेरियल और कंक्रीट नाउन बोलते हैं। फर्दर इस तरीके से अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हमारे पास हैं, हम लोग इनको 5 सेंसेस के लिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अपनी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, हेयरिंग है, कौन कौन सी है स्मेलिंग है, कौन कौन सी है टच है, कौन कौन सी टेस्ट है, साइट है, इनके ज़रिए हम लोग इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई। बट जब हम मटेरियल नाउन को देखते हैं तो इनके ऊपर हम लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो ज़्यादातर मेजरेबल होते हैं, इट्स मीन के अनमेजरेबल, इट्स मीन के अनकाउंटेबल होते हैं, अनमेजरेबल होते हैं। बट जब हम मटेरियल और कंक्रीट नाउन को देखते हैं तो वो मेजरेबल भी होते हैं और अनमेजरेबल भी होते हैं, इट्स मीन के दे मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हम लोग इनकी मिसालों पे गौर करते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारे पास इंसाफ है। अब इंसाफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक नेकी है, नेकी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अच्छाई हो गई, इसी तरीके से खूबसूरती है, इसी तरीके से और हमारे पास क्या है, नरमी है। तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दिस वे अगर हम लोग कंक्रीट और मटेरियल नाउन के एग्जांपल को देखते हैं तो देखें सोना, इसके बाद देखें चीनी, इसके बाद देखें चौक, ईंटें, टेबल, चेयर,
ये सारे के सारे हमारे पास कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर बनने वाली वीडियो और अपलोड होने वाली आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।